हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन। और इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में हमने देख लिया था कि इंडिया के देखिए बेसिकली चैप्टर 1 जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। जिसमें 4 पार्ट में से जो आपका पहला पार्ट जो है वो इंडिया का रिवॉल्यूशन है कि कैसे कैसे इंडिया ने अपने रिलेशन को जो है इवोल्यूएट किया है। और उसमें देखेंगे हम कि क्या हम देखेंगे कि भाई अंडरस्टैंड करेंगे फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो क्या रही है, साथ में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो किस तरह का रहा है बाकी देशों से, और कौन कौन से ऐसे एक्टर्स और फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक्टर्स और फैक्टर्स हैं जो कि शेप करते हैं हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हम लोगों ने दूसरे में हम देख रहे थे कि कई इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वो भी हमारा वही चल रहा था इवोल्यूशन। उसमें हम देख रहे थे कि भाई दूसरे में कि 1947 से लेके 62 के बीच में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, ठीक है। हम इंटरनेशनलिस्ट थे पहले में, फिर आइडियलिस्ट थे, और उसके बाद नॉन अलाइंड थे, ठीक है। उसके बाद हमने 1954 में हमने पंचशील किया था, ठीक है। सॉरी सबसे पहले कि आर्टिकल 51 जो है वो हमें पावर देता है, क्या हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कि वी हैव टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल, वी हैव टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें 4 चीज़ें हमें करनी थी कि पहला तो यही पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा ये था कि भाई हमें जो है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना है हर देश के साथ। हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज़ को, ठीक है। और साथ में जो है लास्ट हमें जो है जो भी डिस्प्यूट हो उसको हमें कोशिश करनी है कि मतलब उनको इनकरेज करना है कि उन डिस्प्यूट्स को हम जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को हम जो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व कर सके। उसके बाद हमने देखा था कि भाई हमारे पास 3 मेन जो है की फीचर्स हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से ही आपको मैं बता देता हूँ पूरा कंप्लीट तरीके से कि लास्ट क्लास में हमने अभी तक क्या क्या देखा हुआ है। देखो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, पहले वाले पार्ट के अंदर जो पहला इवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो फॉरेन रिलेशन है, उसके अंदर हमने ये देखा था कि भैया देखो कोई भी देश इंटरनेशनल रिलेशन जो मेंटेन करता है उसका रीज़न होता है उसके अपने खुद के जो है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, और प्लस स्टेटस हो सकता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया देखो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, पहली चीज़ है कि मिलिट्रीली हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे फोकस करना है। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो भाई इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। उसके बाद एफडीआई हो गया आपका, उसका पॉवर्टी इरेडिकेशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर अस इन द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द ह्यूमंस प्रॉस्पेरिटी, पीपल्स प्रॉस्पेरिटी। और लास्ट में स्टेटस। स्टेटस मतलब कि पॉलिटिकल पोजीशन क्या है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें जो है मेंबरशिप चाहिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा नेशन है, हमें सिक्योरिटी मतलब कि हमें जो है वीटो पावर देना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बड़ी इकनॉमी है, हम लार्जेस्ट इकनॉमी है, तो that is our demand always, that we always raise our voice. And for raising this particular voice, that we want to be a member, we want to be a permanent member of the United Nations Security Council. So definitely we need support of other countries, and if we really want to have the supports of other country, for that purpose we have to just maintain the good relations with all of them. And those who are continuously keep on supporting us, I think we need to maintain that relationship with them in a good sense. So that's why we can have a combined voice of permanent membership of the United Nations Security Council. And after that I will say the determinants, कौन कौन से ऐसे एक्टर्स और फैक्टर्स हैं जो कि आपका जो है रिसेप करते हैं, मतलब शेप करते हैं आपका जो है फॉरेन पॉलिसी को। तो मैं बोलूँगा उसमें एक हिस्टोरिकल होता है, जियोग्राफिकल होता है, आपका इकोनॉमिक होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका डोमेस्टिक और प्लस इंटरनेशनल, ठीक है। तो हिस्टोरिकल में जैसे कि वही वाली बात है कि भैया क्या पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, क्या फिलॉसफी और कल्चर है इस पर्टिकुलर देश का जानना। उसके बाद हमारा लोकेशन और रिसोर्सेज जो है वो मतलब कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा भाई हम डिप्लोमेट है, तब वी शुड बी नोइंग अबाउट कि भाई व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द फिलोसफी एंड द कल्चर दैट वी आर मेंटेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ट्रेडिशन दैट वी आर मेंटेनिंग। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सच थिंग्स। एंड आफ्टर इट, इफ आई टॉक अबाउट द जियोग्राफी वी नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, द स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट वी हैव एंड द रिसोर्सेज दैट वी abundant resources that we have. I think that is also going to shape our foreign policy. And if I talk about the economic development, the development needs
and the stages, like the development stage, we have what we are a developing nation, and the development needs is what the, nowadays India is focusing upon the education, and the education is going online. So for the online, we need to understand the importance of the online equipment that we need from such country, those who are providing this at a affordable price. So I think I will say that this is very important, that we need to understand that how much these factors are very important. These factors and sectors and actors are very important for us to reshape our or shape our for policy. Then after that, domestic milieu and international milieu. The domestic milieu, I will say, what are the institutions available in India? Those who are those who deals with the foreign policy matters, or rather, I will say the foreign ministry and FEMA and the RBI. Such institution which we're knowing about political atmosphere. What is the political atmosphere? That is also need to concern on that is also need to think about like what is like recent the government is the BJP government was talking that it is very important that how we maintain the domestic needs, domestic, domestic in the domestic milieu, you will find out that the institution, the political atmosphere is very important to understand that what is going on, like the ideology of the recent government which is ruling in the country right now. Like the BJP is something capitalist, you can find out they are the right wing government. And if you talk about the Congress, that always goes in a side of, or in a inclined shape of, I can say, the socialism and the sociology, that is of their socialism is their main concern, if I speak about. And after it, I will say the consensus of the national interest is also very important. Like the people, those who are supporting the particular thing, I think that we also need to understand while maintaining the international relation with any country. And after it, I will say the needs and ambitions are very important thing, and the capabilities and leadership, like I will speak that the leadership that we are maintaining for this purpose. And I think the leadership, I also already spoke, like that the man who is ruling the nation, I think we need to understand their ideologies while maintaining the international relation. And when we understand in a complete manner, we will definitely shape our international relations with the good actors and the factors. After that, I will say the second point, that was the evolution of foreign policy after first phase. I will first point that the second, I will say the evolution of foreign policy that took place between 1944, 1947 till 1962. This was the period where we were the internationalist, idealist, and the non-aligned. That the policy of India was that time internationalist, idealist, and the non-aligned. Internationalist means what? That the internationalist means you can speak uh, like we were understanding the importance of the relationship with the countries that we need to manage that time. Because like I will say the after the independence that we had got, the legacy of national movement we need to maintain. That the leaders like Mahatma Gandhi and the Pandit Jawaharlal Nehru was himself was very pragmatic about the social betterment. So that's why we were thinking that we cannot isolate our country from our neighbor countries and from the entire world. So obviously we need to understand the values and the importance that how our country is going to our country is going to be our country is going to be in this era, and how our important how our matters, how our concerns will be important for maintaining our foreign relations with other countries. I think we need to make, because we did not have a lot of resources then for that time. We also need to understand the value of other countries, that they can help in our resources that we wanted that time. So I think that was also very important thing, that the legacy of national movement. And a part of it, I will say, the British had ruled India for a 109 uh, approximately two centuries. British government ruled India, and when they ruled India at that time, they just left the unemployment on the mass and the massive level. And I will say the food crisis that we were facing at the time of independence.
So, and third one, that we were facing the poverty at a larger scale. So all these factors that we, and after that I will say the a part of it, that we were facing the security problems. We could we needed to focus upon our defense system. So all these factors were very important that time. And when we when we were just having our beginning of the of our democratic structure of this nation. So that time we decided that we will go with the internationalist, idealist, and the non aligned. I'm just going to talk about what is the I will say that it is all about the idealist. Idealist means, idealist I will speak about what, that the idealist is means all that the we will we will always promote the international peace and security in the entire world, and we will maintain the just and honorable relationship with the between other countries, and we will foster the respect of the international laws and treaty obligations. All these factors we will understand. And we always understand that we always, like idealist I will say that the even before India became independent, when I spoke about that the legacy of international movement. And if I talk about the before India became independent, the ASEAN relations conference was held in New Delhi from 23rd March to 2nd April 1947. तो मतलब कि आपका एशियन जो रिलेशन का जो कॉन्फ्रेंस था, इन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुआ था 23 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक 1947 में आपका। उसमें भी उसमें भी आपका जो है नेहरू जी ने ये बात कही थी। नेहरू सेड दीज थिंग्स दैट वी स्टैंड एट द एंड ऑफ एन एरा, वी स्टैंड एट द एंड ऑफ एन एरा एंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू पीरियड ऑफ हिस्ट्री। हम जो एक नए वक्त की शुरुआत और एक पुराने बहुत बड़े दौर की खात्मे पे खड़े हैं आज। तो यकीनन जो है हमें अब एक नई पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, ये नेहरू जी का कहना था उस टाइम पे। उसके बाद जो है इन्होंने खुद जो है मतलब कि जैसे कि एज़ पर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, हमें जो अपने डिस्प्यूट को जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है। तो नेहरू जी ने खुद द रेफरल ऑफ पाकिस्तान एग्रेशन इन कश्मीर टू द यूनाइटेड नेशन इन दिसंबर 1947, although it is seen by many as a mistake on the part of the Kashmiris, as a part of on the part of India's leadership in reposing in interest in international organizations such as the United Nations। तो ये हालांकि कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नेहरू जी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और एक बिलैटरल एग्रीमेंट को जो है इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर हम उससे और उलझाने वाला ही काम कर रहे थे। सो खैर दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट वी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी वर जस्ट लुकिंग अपॉन। आफ्टर दैट आई विल से व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस फेस, आई विल से। तो मैं कहूँगा कि the key features of this phase was played a significant role in multilateral institutions। हमने multilateral institutions के अंदर काफ़ी रोल प्ले किया, ठीक है, लाइक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर हमने फोकस किया, एंड मर्ज्ड अस क्रिटिकल प्रोपोनेंट ऑफ नॉन इमर्ज एज द क्रिटिकल प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हाँ, नॉन अलाइनमेंट की बात तो मैं करना भूल ही गया कि देखिए नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दैट टाइम द वर्ल्ड हैड बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट यू विल स्पीक दैट दोज हु आर फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, there was a one side, and those countries who were following the Union of Soviet Socialist Republic, or either say the Russia, USSR। So the division of this world between two powers and between two superpowers, and both were just they both were trying to stretch other countries in their favor। So this was the question again, this was the question in front of the India also, that India also has to India has to also decide that which part we are going to support, and we also had this responsibility that how we are just going to have how we are going to have all these factors to understand that
we will support USSR or USA. So this was a question against us also, but we decided that we will be non-aligned. We will not go with any country, and we will be separate from this war of supremacy, and we will just focus upon our development first of all, because this is our need of the country. This is the national interest of our country nowadays. And a part of it, that they decided that we will also not oppose any of them. Like, we will support USSR, USA both for their good things, and we will oppose for all such things those who are going to not those who are not going to benefit us. So this was our first concern at that time that we had just decided about. Okay, after that, I will speak the key features of this phase was what played a significant role, emerged as a critical proponent of non-alignment, and significant contribution that we made for the process of decolonization. So the decolonization was also a very important concern for India that time. Like, we supported and we encouraged to the nation to fight against this colonization and to get independence from the countries, those who are just ruling them. So this was the key features that we maintained. We political we played a significant role in multilateral institutions. We emerged as a critical proponent of the non-alignment movement, and significant contribution to the process of decolonization that we maintained at that time. After that, I will say the international participation that we also maintained, that the International Control Commission in Vietnam, along with I will say Canada and Poland. Uh, दैट वाज इन 1954. उसमें हमने पार्टिसिपेट किया. इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम, जिसमें हमने क्या कहता है कनाडा और आपका पोलैंड के साथ जो है पार्टिसिपेट किया. उसके बाद देन न्यूट्रल नेशंस रेप्ट्रिएशन repatriation sorry neutral nations repatriation commission in Korea. repatriation commission हमने जो है कोरिया में एस्टेब्लिश किया 1952 टू 54. उसमें हमने सक्सेसफुली वहाँ पार्टिसिपेट करके दिया. उसमें हमने वहाँ पे पीस मेंटेन करवाया. एंड देन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन बल्जियन कॉन्गो. सो द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स हमने भेजा क्या कहते हैं आपका जो है कॉन्गो के अंदर. वहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया 1960 से लेकर 1964 के अंदर. देन उसके बाद आपका जो है 1952 में जो है 1952 में India was the first country and who introduced the draft resolution co-sponsored by Ireland to bring about a global ban on nuclear test. So we were the first country who opposed the nuclear test. So we sponsored we and Ireland, both India and Ireland, both India and co-sponsored Ireland, both presented this. I will say the draft resolution in the United Nations United Nations, that we want a global ban on the nuclear test. After that, I will say that this was the entire incident. तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले देखेंगे कि भाई हम लोगों के पास आर्टिकल 51 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, उससे पहले अगर हम देखें 1947 से लेकर 1962 में हमारे पास क्या सिचुएशन थी, वो हमने देखी कि भाई हमारे पास जो है नेशनलिस्ट आइडलिस्ट और क्या कहते हैं आपका जो है नॉन अलाइंड तरीके से इंडिया चलने वाला था. उसका हमने देखा लेगेसी क्या थी नेशनल मूवमेंट की, पास्ट इंडिपेंडेंस जो है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन थी, और नेशनल डोमेस्टिक डिमांड हमारी क्या थी, डोमेस्टिक नीड क्या थी. उसका आर्टिकल 51 में हमने देखा कि हमें जो है इंटरनेशनल पीस और क्या कहते हैं सिक्योरिटी को प्रमोट करना है. और साथ में उसमें हमने देखा कि उसके चार कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो हमने देखा कि भाई कौन कौन से इंटरनेशनल, पहले तो वही है क्या कहते हैं प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, मेंटेन करना जस्ट एंड क्या कहते हैं ऑनरेबल रिलेशन, और उसके बाद जो है फोस्टर करना रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉज को. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी और लॉज को क्या कहते हैं प्रमोट करना. उसका इनकरेज करना सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन. ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 3 फीचर्स क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे जो है इस फेज़ के वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना किसके अंदर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर. उसके बाद आपका मैंने बताया था कि हम क्रिटिकल प्रोपोनेंट थे किसके
हम क्रिटिकल प्रोपोनेंट थे आपके जो है नॉन अलाइनमेंट के, और हमने प्रोसेस ऑफ डिकोलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया। उसके बाद हमने बताया कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम अलॉन्ग विद कनाडा एंड पोलैंड जो है वो 1954 में हमने वहाँ पे किया। उसका जो है आपका न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन इन आई विल से द कोरिया, वो भी हमने 1954 में मेंटेन किया। उसके बाद जो है आपका हम क्या कहते हैं पीस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन कॉन्गो, वो भी हमने भेजा वहाँ पे। और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले जो है ग्लोबल बैन का इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर द India introduced a draft resolution co-sponsored with the Ireland to have a to about is about to global ban on nuclear test, तो ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1954 में वी वेंट फॉर चाइना के साथ। अब चाइना के साथ हमने पंचशील समझौता के साइन किया गया थे। आपका जो है पंचशील जो है 1954 में हमने पेकिंग के पास क्या कहते हैं साइन किया गया था। इसको जो है ठीक है ना ध्यान रखें, 29 अप्रैल 1954 का साइन हुआ था ये आपका। इसमें हमारे जो है पंचशील में 5 हमारे पास प्रिंसिपल्स है, जिसमें क्या था कि क्या कहते हैं म्यूचुअली वी विल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी रहेगी हमारी, साथ में जो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की हमारी पॉलिसी रहेगी। उसका इक्विटी एंड क्या कहते हैं कोऑपरेशन जो है वो भी हमारा क्या कहते हैं मतलब हमेशा बना रहेगा, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस विल बी आर कंसर्न। सो दिस वाज द आई विल से द 5 पॉइंट्स दैट वाज द पंचशील। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद जो है आपका एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो हुआ, क्या कहते हैं एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इन बांडुंग इंडोनेशिया इन 1955 विद द 29 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड 10 प्रिंसिपल ऑफ द बांडुंग कॉन्फ्रेंस दैट वी मेंटेन दैट टाइम। वो भी हमने 10 क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस प्रिंसिपल की बात की। उसके बाद क्या है कि आपका the boundary conference paved way for the creation of non-alignment nations in 1961। और इसी पर्टिकुलर मीटिंग के बाद जो है आप कह सकते हैं कि हमारा जो है नॉन अलाइनमेंट जो है उसको क्या कहते हैं मतलब एक हवा मिली है, उसको एक सपोर्ट मिला। उसके बाद इंडिया ने जो है 1960 में क्या कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने जो है 1960 में जो है उसे इम्प्लीमेंट किया कराची में। उधर से आपके आयूब खान हुआ करते थे प्रधानमंत्री, और इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके बाद जो है आपका जो स्टबर्न सालाजार रिजाइम था जो मान नहीं रहा था आपका गोवा के अंदर अपनी गवर्नमेंट हटाने के लिए, जबकि हमें जो है एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस का जो है दबाव आ रहा था कि आप प्रोसेस ऑफ डिकोलाइजेशन की बात करते हैं, फिर अपने देश में आपने डिकोलाइजेशन कर रखा है उसको हटाइए। तो फिर इंडिया ने चूज़ किया कि हम फोर्स भेजेंगे वहाँ पे। उसके बाद जो है हमें अगले साल जो है सेटबैक मिला चाइना का, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया दैट वॉज ठीक है, और उन्होंने कैप्चर कर लिया अक्साई चीन का इलाका, 14,700 स्क्वायर मील का जो है इलाका उसने कब्जा कर लिया, जो कि अपने आप में 38,000 किलोमीटर है, जो कि लगभग भूटान से बराबर ही है। 38,394 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूटान का है। उसके बाद हम अगर देखें तो स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा सा ही छोटा होगा। स्विट्ज़रलैंड का अगर आप एरिया देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड का एरिया आपको मिल जाएगा लगभग 41,285 किलोमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन फाइंड आउट इट वाज अ सिमिलर अमाउंट। हमने यहाँ तक पिछले क्लास में कर लिया था, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि आगे हमने कैसे मेंटेन किया। तो आगे हमारा जो है आपका देखेंगे ठीक है अभी हम देखते हैं।